हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो ऑन इन्वर्टिबल फंक्शंस पार्ट 2। और इसमें हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस के कुछ एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय f of x equal to greatest integer function of x. Now what does it mean? Means the greatest integer less than or equal to x. So this function is neither on 1 nor on 2. कैसे बता सकते हैं? So if you take f of 1, then the greatest integer less than or equal to 1 is nothing but 1. Now if I take x equal to 3 by 2, then the greatest integer less than or equal to 3 by 2 is nothing but 1. Therefore f of 1 is equal to f of 3 by 2, but 1 is not equal to 3 by 2. So this is not 1 1. Okay? Now this function is neither on 2 because greatest integer function का जो है, you can clearly see fx equal to greatest integer function of x. It means the greatest integer less than or equal to x means the answer, the result is an integer. So आप कुछ भी x यहाँ पे बिठा दे, इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा. मीन्स whatever x you put from R, the result is a member of Z. So its range is nothing but Z, which is clearly not equal to R. Therefore f is not onto 1 1 नहीं है, onto नहीं है, so it's not bijective. So using the theory we developed in part 1, जो हमने part 1 में सीखा, अगर उसको यहाँ पे यूज करें तो how to make that function bijective if we have the domain R and codomain Z. So first of all I can make f onto by taking R to Z, f of x equal to greatest integer function of x. This function is onto because function is defined on its range. Now how to make that function 1 1? It is to be noted that if I put integer in the greatest integer function, then this is nothing but the greatest integer, integer less than or equal to n is nothing but n. So every integer maps to the same integer. ठीक है? So if I define the function from z to z, then with the same definition this map is 1 1 and onto means bijective. Now what happens if greatest integer function is bijective? Then it coincides with the identity map on Z. It means if I take any n, then the result is nothing but n according to the definition of greatest integer function. So this is the definition of an identity function on Z. Okay, so if we convert the greatest integer function to a bijective map using these things, then the resulting map is nothing but identity map. Clear?
Next is that number 2. If I define a map f from r difference 1 to r defined by f of x equal to x plus 3 by x minus 1, then is this map is 1 1? Let's check. So f of x is equal to f of y. If I consider, then x plus 3 by x minus 1 is nothing but y plus 3 by y minus 1. So after a basic calculation, we can conclude that xy minus x plus 3y minus 3 is equal to xy plus 3x minus y minus 3. So cancelling the parts, we can conclude that this 4y is equal to 4x. This implies 4x is equal to 4y. This implies x equal to y. Therefore, the map is 1 1. Now, let us check for onto whether the map is onto or not. For onto, we take a point from the range, because as we have discussed in part 1, a function is onto if its range coincides with the codomain. So to check these functions whether it is onto or not, we should have a clear knowledge about the range. If the range of the function is same as codomain, then the function is onto. Clear? अगर हमारा रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया, मीन्स whatever the range come should be equal to r. If it is equal to r, then function is onto. Now if I take a point from the range, then it must be equal to f of x, and f of x has the form this. So what is the trick is that the trick is y is expressed in terms of x, so you express x in terms of y. ठीक है, आपको x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. नाउ आफ्टर एक्सप्रेसिंग, जब हमने एक्सप्रेस कर दिया तो x तो कहाँ से लिया? x इज अ पॉइंट ऑफ द डोमेन. सो जिस पॉइंट के लिए, हियर इट क्लियरली, जिस पॉइंट के लिए मेरा x वेल डिफाइंड होगा, जिस पॉइंट के लिए, मतलब जिस पॉइंट में, मतलब मैं y की बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट के लिए, जिस y के लिए हमारा x वेल डिफाइंड होगा, वो सारा पॉइंट, मतलब वो सारा y रेंज पे होगा. ठीक है, क्योंकि रेंज तो बना ही है, वो सब x के लिए जो डोमेन पे है, तो डोमेन का सब पॉइंट वेल डिफाइंड पकड़ते हैं हम लोग. बिकॉज ऑफ दैट वी लीव दिस वन. ओके, सो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशंस, मीन्स अगर हम, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मीन्स हम इसको लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो y का जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो किस किस रियल नंबर के लिए वैलिड है, हमको वो चेक करना है. सो इफ आई ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, ये आपको इजीली पता है, इसको इस तरफ ले जाइए, फिर y इज इक्वल टू x प्लस 3. दिस इज नथिंग बट yx minus x is equal to y plus 3. So ultimately this is nothing but x is equal to y plus 3 divided by y minus 1. ठीक है, y plus 3 is nothing but y minus 1. Now check for which points मतलब किस y के लिए
दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, ये एक्सप्रेशन वैलिड है मतलब एक्स भी वैलिड है। ये अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोज हु हैव रेड range and domain and how to find range and domain in class 12th, they can 12th nahi sorry in the class 11, so they can easily say ye this expression is not valid for y equal to 1. ठीक है, this expression is not valid for y equal to 1. It means the range of this function cannot have 1, so the range is this. Is this set equal to R? The answer is no, not equal to R. Therefore, we come to the conclusion that this map is not onto. So, this function is not bijective. So, to make the function bijective, we just replace this R by this set. If we replace this R by this set, then function mapped to its range is always onto, as discussed in part 1, and in that case the function is onto. ठीक है, now come to example 3. F from R to R defined by f of x equal to mod x plus 1. Is this function is 1 1? Is this function is 1 1? The clear answer is no, because if I take the image of f of 1, then answer is 2. Clear? If I take the image of minus 3, the answer is 2. Therefore, f of 1 is equal to f of minus 3, but 1 is not equal to minus 3. 1 is not equal to minus 3. So this function is not 1 1. For onto case, what is the domain, what is the range of this function? This function is derived from modulus function, and modulus function is discussed in my previous videos. So modulus function का रेंज जो है वो है आपका 0 to infinity. ठीक है, modulus function का जो भी है आपका रेंज इज फ्रॉम 0 to infinity. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट modulus function, so its range will be 0 to infinity. Now this is the range, okay, of the function. Now, is this set is equal to this set? The answer is clear no, because it lacks all the negative points. So this function is not onto. Now how to make that function onto? You replace this R by this set. It's clear, pretty clear. Now how to make this function 1 1? This is very much important to understand how to make this function 1 1. Suppose this is your line. मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, if you have sufficient information regarding the function like its domain, its codomain, फिर ये कैसे मैपिंग कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं और 1 1 फंक्शन बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर -1. ओके, सो इफ आई
this function is nothing but the copy of modulus function, like this, about this line, about the line x equal to -1. Okay, mod x is a फंक्शन इसका ग्राफ है ऐसे और ऐसे अबाउट x इक्वल टू 0. सो इफ यू टेक x इक्वल टू सम डिफरेंट पॉइंट सम अल्फा और काइंड ऑफ लाइक दैट, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैंने x प्लस अल्फा लिखा तो दिस फंक्शन विल फॉर्म अ ग्राफ लाइक दिस अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस अल्फा. ठीक है. So the line is this, and the point at which it cuts y-axis, ये कौन सा पॉइंट होगा? जिस पॉइंट में x 0 होगा. If x is 0, fx is 1, so the point is 1. ठीक है. Now see clearly. आपका जो रेंज है वो यहाँ से जा रहा है ऊपर. ठीक है, अप टू इन्फिनिटी. तो आप किसी भी एक लाइन को पकड़ लीजिए. अगर मैंने इसको पकड़ा, 0 0, this is x equal to -1. If I take this one, let's see, for every point from here to is x, so every point I have a unique image. ठीक है, for every point I have a unique image. तो यहाँ तो image नहीं बनेगा, this is about line, so image यहाँ पे बनेगा, so I have unique image. ठीक है. So if I take a point from here, it will be point here. So if I take a point x, यहाँ से कोई x लिया, that image will form here. यहाँ से कोई x लिया तो image will form. So clearly the function is 1 1 because there is no part in the line which is parallel to x-axis. So this function is 1 1. So it means if I restrict the function, मैंने कहाँ पे restriction किया, इसमें मैं फिर से आऊँगा. पहले मैं if I restrict the function, ये कौन सा पॉइंट है, x is equal to -1. So if I restrict my function to close interval -1 to infinity to 0 to infinity, then this map with the same definition is 1 1 and 1 2. ठीक है. Story is not over yet क्योंकि this is your -1, so this is x equal to -1. This is also another line. ठीक है. So यहाँ पे भी क्या है, for each x you have fx. यहाँ पे भी no part of the line is parallel to x-axis. इस लाइन का कोई भी पार्ट parallel to x-axis नहीं है, strictly increasing है. so यहाँ पे भी ये फंक्शन का ये जो पार्ट है इसमें भी ये 1 1 शो करेगा. तो if I define the map from f from -infinity to -1, closed -1 to 0 to infinity, then with the same definition the map is 1 1 and 1 2. So see, we have defined two sets at which the map is 1 1, and when it defines to its range the function becomes bijective. ठीक है.
सो आज के लिए इतना ही। मैंने बस इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आप लोगों को समझा पाऊँ कि अगर हमारे पास कोई भी मैप हो जो बाइजेक्टिव नहीं है तो हम लोग इसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल साइन एक्स को कवर किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और एक दो एग्जांपल बता दूं कि आप लोगों को लगेगा कि शायद साइन एक्स ही ऐसे बन सकता है। सो देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो व्हिच यू कैन मेक 1 1। अगर 1 1 है, ऑन टू नहीं है तो भी बन सकता है, फिर ऑन टू है 1 1 नहीं है फिर भी बन सकता है। ठीक है, सिर्फ हमको चाहिए क्या कि फंक्शन का इनफ इंफॉर्मेशन हमारे पास हो कि पॉइंट्स कैसे मैपिंग कर रहा है। अगर ये पता चल जाए कि कैसे मैपिंग कर रहा है, देन इट इज़ इजी टू डिफाइन ए बाइजेक्टिव मैप। अगर वो पहले बाइजेक्टिव नहीं भी था तब भी हम लोग उसको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, और एक बाइजेक्टिव मैप नहीं, मोर देन वन वी कैन डिफाइन, लाइक इन द केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसमें हमें 2 सेट मिला, 2 जी मिले, 2 जी से हम लोग 2 अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, विद द सेम डेफिनेशन वी कैन डिफाइन 2 डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और आगे की जो टॉपिक्स हैं लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शंस, वो सब कवर करेंगे। थैंक यू।